बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome to the first live session of Quran Institute Pakistan. Quran Institute is a network of 43 institutes working across the country to educate and develop women of Pakistan through the teachings of Quran and Sunnah. I am Arisha Masood Khan, a computer system engineer and a project manager, and I am very thankful to Quran Institute for giving us this platform to conduct this live event. Today with us, we have a very special guest speaker, a doctor, a writer, a mentor, poet, a psychiatrist. She has worked with numerous organizations in Pakistan, Canada, and now in Australia, and is known for being an opinionated personality. Dr. Javeria Saeed. Assalamu alaikum, Dr. Javeria. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, and Jazakallah khair for such a fantastic introduction. Am I all those things? Really? Yes, of course you are. So, Doctor, let me come straight to our very interesting topic of family management techniques and issues in a household that we have in this region of the subcontinent. So, the first question that I have for you is that I think in any strong relationship, strong household, or a healthy society, or any good setting is the one which allows communication, in which there is a dialogue, a healthy dialogue. And unfortunately, in our families, we see that there's a lack of communication between genders, between age groups, different age groups, there's a communication gap. So, how do you suggest we can overcome this issue, especially in a family setting? How we can promote healthy communication and dialogue? I think everyone has to play their role as elders. I think they should step forward first, and they should start sitting with the youth and ask all those questions, or ask them what are their views about certain issues within the family or outside the family, whatever is going on in the society. I think as elders, look, why elders don't do that? One of the reasons could be because they're scared. Sometimes they feel like if we ask those questions, or if we sit with them and we initiate a discussion, so the youth might come up with certain questions that we don't know the answers of. The other fear could be they might disrespect us if they ask certain questions that could be disrespectful for us. So some of these fears, because of these fears, they kind of hesitate to have those discussions, sit with them. And I think at certain times, they just shush the younger generation, just shush, don't ask those questions. Those are not the right things to ask. Just follow the path, or just do as we tell you, or everyone else is doing. One is that, and number two is that ignorance, and just avoid those situations where you can have those things. So I think if any of the elders are listening at the moment to us, like including myself, like I also consider myself as part of the elders, like badi baji, ya khala, ya mama, ya bhabi, ya koi bhi. So I would say that I will sit with the youth and I ask them, and sometimes, and sab kuch tips dene ke liye. For instance, I was just taking a class of young girls on hijab. Usually the way we talk about hijab is that we say, these are the instructions, these are the guidelines, and we should be following that. So I did not do that. I very briefly, I explained to them what are the guidelines, but then I asked a question like, what are your views about it? What do you guys think are the challenges? Do you think I am sitting in a certain way, wearing a certain hijab? Do you agree with it? Do you have any reservations? Some of you are not wearing the hijab, or some of you are wearing it in a different way. Do you feel comfortable talking to me? So those kind of things that I open up. Or what about gender interaction? What about the role of women in the society? So I think these sorts of things, you open the questions. If you don't know the answers, that's all right. Listening and validating and saying that I understand, whether, although I don't know the answer, but I do understand that these are important questions. So saying that can also make those bridges between the two generations, or between two parties, like whoever they are. So from elders' part, I think they should take the lead. They should do that. But from the youth's perspective, I would say, do ask those questions, but be respectful. They are not your enemies. They are not avoiding these discussions because they don't want to. Simply, they're scared that they might, if what would happen if they wouldn't know the answers. You guys might
not respect them. You would question their experience, their life experience, and whatever they have. So if you be respectful and you also give them space, then we might have that environment when people sit together and they have those discussions, and then value their opinion as well. You say, yeah, मुझे अंदाज है आप बहुत आपका भी बहुत तजुर्बा है, I want to learn from you, and ये बात भी ठीक है, लेकिन what about this? So अगर youth हमारी इस वक्त ज्यादा aware है और वो ज्यादा चीजों को समझती है, तो I would say कि you have that discussion more sensitively if you feel like they are guarded. So आप वो sensitive discussion इस अंदाज में शुरू कर सकते हैं. तो I think this is something that both parties can do. Yes, exactly. That was very insightful. And I'd like to add that throughout Islamic history, we see कि मुकालमा जो है वो encourage किया जाता है. Hazrat sallallahu alaihi wasallam would used to ask suggestions from his wife, his companions, और उसमें कोई, in fact, one of my favorite things in Holy Quran is there are different narrations in which there is a mukalma between a prophet and Allah Ta'ala, and then there is a mukalma between Allah Ta'ala and angels that when God announced that I'm creating human as my Khalifa, तो angels questioned कि आप ऐसे इंसान बनाएंगे जो bloodshed करेंगे दुनिया में. So it's like it's not something that's banned in our religion. ये बस subcontinent का एक I think influence है. So that you're very right in that. Yeah. Okay, so the second question is कि does हमारे यहाँ एक image दिया जाता है that women after getting married especially and then on top of it becoming a mother, then she should just completely forget herself. So does Islam require a woman to forget herself for the sake of her family, for the sake of her house, and prioritize everything else above her? And how to, in the continuity of this question, there's another question that how should she do self-care and how should she stay playful and cheerful in that environment when it's expected that she prioritize herself on the very end? How can she do self-care without being labeled selfish? So now this sounds like a very simple question, but it might require a few things to be said. I mean, few details. I think every single person, whether male or female, they have certain roles and responsibility. The first and foremost role, being a Muslim, is being a banda of Allah subhanahu wa ta'ala, an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. So even the motherhood comes after that. But becoming a mother, being abd through your responsibility is I think the way of Islam. This is what we have learned. So ऐसे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि, because I have been to women and I just attended a session where women were asking me कि क्या ख्याल है कि अगर रमजान के दिन आ रहे हैं and we most of the time we just cook and which is why we can't pray tarawih, is that okay? So आप देख रही हैं कि हमने अपनी खवातीन को एक ऐसी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया है कि आप तो घर से बाहर निकलने के काम के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अपना करियर, क्या उसकी कोई और चीज. लेकिन हमने तो अपनी खवातीन को किचन और खाने के ऐसे चक्कर में डाला है कि हम वो जो आब्द वाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी उससे बचना चाह रहे हैं. सारी कह रही है कि मुझे कि मैं नहीं करूं. तो वो कह रही है क्या हुआ अगर हम लोग अब रमजान में बहुत खाने वाने इतना पकाते तो अगर औरतें तरावी ना पड़े तो कोई मसला तो नहीं है. So you can imagine, like there are certain roles and responsibilities अल्लाह ताला का बंदा होने के नाते. तो मैं उसको सिर्फ ये कह रही थी कि ये खाने के चक्कर में बरसगीर की खवातीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया है कि एक औरत का जो अपना पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है मस्जिद से या उसके जरिए, वो उसको भी बहुत सारी औरतें पीछे हट गई. अगरचे कि बहुत सारी औरतों का दीन बहुत अच्छा भी होता है. तो बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज दैट कि हमारे डिफरेंट रोल्स हैं और उन सारे रोल्स में as a male or a female we have to play all those roles. So अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखते हैं, हालांकि वो एक मर्द थे, हालांकि वो एक नबी थे, हालांकि वो हेड ऑफ द स्टेट थे, हालांकि वो हेड ऑफ द आर्मी थे, and despite all those responsibilities he used to mend his own shoes, he used to clean his house, he used to make his bed, and he used to go to his daughter to meet with him. He used to play with the younger kids out there. So despite all those things, he was जबकि हमारे यहाँ roles बड़े divided हैं, because since men are working outside, so they are not responsible for whatever is going on behind those walls. So इसी तरह औरतें भी, इसका मतलब है एक शख्स बया कुआ कई जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं. तो औरत होने के नाते अगरचे के डेफिनेटली हमारा जो मेन रोल है वो ये है मदरहुड है, क्योंकि हम भी तो कितने प्यार से नर्चर हुए, जब भी तो हम
वो हैं जो आज हम हैं. सो अब इसी तरह हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट दैट रोल, टू कैरी ऑन दैट रोल एज वेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोल में अपने आप को इस तरह लगा दें, खासतौर पर वो खवातीन जो उसके अलावा भी कुछ करना चाहती हैं, कि उनके लिए हम बाकी के रास्ते बंद कर दें. अच्छा देखें, हर औरत मुख्तलिफ है, जरूरी नहीं है हर औरत जॉब भी करना चाहती हो, जरूरी नहीं है हर औरत जो है वो कोई प्रोफेशनल काम करना चाहती हो, घर से बाहर निकलना चाहती है. तो एवरी वन इज डिफरेंट. लेकिन अगर कोई औरत ऐसी है जिसके अंदर सलाहियतें हैं, शी वांट्स टू डू थिंग्स, तो फिर सोसाइटी को और फैमिली को और लोगों को उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए. और वो औरत खुद भी ये सोचे कि मैं उन तमाम जिम्मेदारियों को कैसे अदा कर सकती. तो हम देखते हैं कि इवन सहाबियात भी हैं, या उसके बाद जो मुसलमानों की एक हिस्ट्री गुजरी है, उसमें खवातीन हैं जो कि उलमा हैं, जो कि मुफस्सिरीन हैं, जो कि टीचर्स ऑफ द टीचर्स हैं, and they're doing all those things, being a mother, being a wife. जैसे कि हम हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ते हैं, she is a mother and she is fighting in the army, protecting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. So औरत भी ये कहे कि मैं अपना रोल उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करी बीइंग अ मदर, लेकिन मुझे अगर दूसरे काम भी करना है तो देयर शुड नॉट. इल्म हासिल करना है, फर्ज करें औरत ने तो इल्म तो सारी जिंदगी हासिल करना है, वी शुड नॉट बी कीपिंग अ वुमन फ्रॉम डूइंग दैट जॉब. इसी तरह अगर वो अपना समाजी रोल अदा करना चाहती है, मेरे ख्याल है आपने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है, ये जामिअतुल मोहसनात और जमात इस्लामी खवातीन की जानिब से अटेंड किया, ये लोग तो खुद एक रोल मॉडल्स हैं मेरे ख्याल में, इनकी खवातीन के इन्होंने किस तरह अपने घर में बच्चों की भी तरबियत की है, उसके बाद ये दीन का काम भी करती हैं, उसके बाद ये अदारे भी चलाती हैं, इन्होंने वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, इन्होंने मुख्तलिफ इनकी एनजीओज हैं, इनके स्कूल्स हैं. सो व्हाट डज दैट सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट? बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, सोसाइटी में कैंपेन्स इस तरह सोसाइटी में की रोल, रन करके. जी लेकिन हाँ, मेरा बाहर के क्वेश्चन मुल्कों ये में था इसको कि सिविक रोल जैसे कहा जाता है. प्रायोरिटाइज करना होता है बेसिकली, कि हर चीज को उसके प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दें और प्रायोरिटी बेसिकली बनाएं. लेकिन बिल्कुल. कहीं भी इस्लाम ये तो इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि बिल्कुल सेल्फ केयर, या जैसे आप तो फिर भी इल्म हासिल करने के उससे कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखते हैं हम सोसाइटी में टू एक्सट्रीम. अच्छा हाँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट थे, उसमें एक ये वो था बहुत कि ही ज्यादा सेल्फ केयर पे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट this is a रिस्पॉन्सिबिलिटी next फोकस. question. I think this is again, this itself is a very important question in itself. That's why like मैंने उसके पार्ट इसलिए करी थी कि जो मैं बात करी थी बाहर और अपने ख्वाब और अपना प्रोफेशन और अपना सिविक रोल अदा करना, that's one thing. Now let's come to the self care. मेरे ख्याल है वो ज्यादा मुतासर है हमारे यहाँ, और खवातीन फिर भी ये काम तो फिर भी कर रही हैं कि वो प्रोफेशनल और सिविक रोल अपना अदा करी हैं, लेकिन सेल्फ केयर इज समथिंग वेयर आई थिंक वी नीड टू टेक some steps. Like if you're doing everything for the whole family, or if you're working and you come back home and then if you want to take rest, nobody's going to give you that space. People will be saying that if you are working outside, then you should not waste any time for yourself, or like whenever you take time for yourself, that's sort of time wasting. तो वो क्या सेल्फ केयर का क्या मतलब है? तो हमारे यहाँ एक मेजॉरिटी ऑफ खवातीन से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहती हैं हम तो मेकअप नहीं करते, हमने तो कभी ये वाला ये नहीं किया, हमें तो ज्वेलरी का भी नहीं पता, हमने तो छोड़ दिया है अब बिल्कुल, और हम तो बस बच्चों 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 में लगे रहते हैं. या कोई ऐसा वक्त हो कि मैं कहूँ कि भाई इस वक्त 1 घंटा दरवाजा बंद करके अब मुझे अपने साथ बैठना है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में औरतों की बहुत मुतासिर है. मैं पता है क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं बहुत प्यार से कहना चाहती हूँ हस्बैंड से. फादर्स बेचारों का इतना रोल नहीं होता, लेकिन जो रोल्स होते हैं या जो एल्डर्स होते हैं घर के, उनको ये कि जब ये खातून सुकून में होगी ना तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर ये हर वक्त थकी रहेगी ना तो ये चिड़चिड़ी होगी, फिर ये काम भी खराब करेगी भी सब कुछ. तो व्हाई डोंट आप, ये तो एक सरमायादाराना निजाम में भी क्या है कि 2 दिन की छुट्टी देता है, आप जाइए, लेकिन औरत को छुट्टी नहीं देंगे तो फिर वो चिड़चिड़ी रहेगी. लेकिन अगर उसके पास अपना स्पेस होगा जिसमें वो अपना ख्याल रखेगी, उसकी अपनी कोई हॉबीज होंगी, अपनी सफाई का ख्याल रखेगी, तैयार होगी, कोई एक्सरसाइज का उसके पास टाइम होगा, कोई पेंटिंग, कोई भी उसका कोई मशगला. पहले जमाने की खवातीन बैठ के सिलाई कढ़ाई करती थी, वो एक मशगले के तौर पे क्या करती थी, बैठ के बातें करती थी. गाँवों में खवातीन बाहर जाती थी, झूले झूला करती थी, कपड़े धोने जाती थी तो बातें करती रहती थी. ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर कोई हमेशा से बहुत सख्त किस्म का रहा हो, लेकिन अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मुश्किल कल्चर होता है वो शायद शहरी कल्चर होता है और मुतवस्सित तबके का होता है, जहाँ पे काम बहुत ज्यादा होते हैं और सुकून के लम्हात कम होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि
My next खवातीन question का is exactly related to this कि जब वो कोई अगर अपना कैरियर परस्यू कर रहे हैं या कोई हॉबी परस्यू कर भी रही हो, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो वो भी काइंड ऑफ एक बर्डन ही होता है बिकॉज शी हैज टू मैनेज दैट रोल एज वेल एंड देन अ रोल इन द हाउस. So how can a girl stay playful and cheerful, और जैसे एक everyone requires to be relaxed and लड़कियों को सजना संवारना, ये सब चीजें तो फिर बिल्कुल उनके लिए तो स्पेस और टाइम और एक गिल्ट फैक्टर उसके साथ होता है. अगर कर भी लें तो दे आर ऑलवेज फीलिंग गिल्टी के जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ कि आई एम डूइंग नथिंग ऑफ फॉर एनीवन एल्स एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय ओन सेक जिसका कोई ऐसा सवाब नहीं है. So how can she stay playful? And then there comes a barrel of depression, self-loath, anxieties. I'm wasting time. Am I being selfish? If I'm giving time to something which is not that important. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो कि ज्यादा रोल्स अपनाने चाह रही हैं, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो कोई बड़े ख्वाब देखता है ना, उसको कुर्बानी तो देनी पड़ती है. ठीक है, इसको तो जहन में रखें. तो जब आप ये यूं सोचेंगे तो वो आप, क्योंकि आप कोई सोसाइटी को, दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते. सो लेट्स कीप इन माइंड फ्रॉम द डे वन कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज अ बिग थिंग. और जो ड्रीमर्स होते हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट एंड दे आर अ बिट क्रेजी पीपल. ठीक है, सो ये तो है कि मैं बर्दाश्त करूं. मुझे पता है जमाने में हर्डल्स आएंगे, जब भी तो मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं होगा कि एवरीथिंग विल बी इजी, somebody will come and make things easy for me. ऐसा तो नहीं होगा. सबसे पहले तो मैं मुझे, और मैं आपसे ये बात कह रही हूँ who has done a lot of things in her life, or life was really hard for me, but I knew that if I am, मैं हमेशा इसको पे लिखती रही हूँ कि जो लोग दरिया के मुखालिफ सिमत रहते हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. पहले तो ये याद रखें. अलबत्ता व्हाट अबाउट द सोसाइटी एंड व्हाट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. देखिए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं सीरा पे पढ़ी थी और मुझे एक छोटी सी जगह पे आके मैं रुक गई. इतनी प्यारी सी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द थे, मगर आप सल्लम ने, उनके पास एक किट होती थी जिसमें उनकी अपनी आराइश और अपनी सफाई और अपनी उसका सामान होता था. उसमें कंघी होती थी, उसमें सुरमा होता था, उसमें खुशबू होती थी, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि वो मर्द थे और उसके बावजूद वो अपनी सेल्फ केयर का इतना ख्याल रखते थे. तो इसी तरह खवातीन को तो अल्लाह सुब्हान तआला बनाया, और हमें मुतअद्दिद अहादीस ऐसी मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये कहा कि भाई मेहंदी लगा ली होती, भाई अपना दुपट्टा रंग लिया होता, सफेद दुपट्टा क्यों पहना हुआ है ना. तो खवातीन के लिए तो ये चीजें हैं. तो आप अपने इन चीजों का ख्याल रखिए और अपने आप को एक तो लाइफ को ऑर्गेनाइज भी करें. इसी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी उसको वक्त दें, हस्बैंड को भी चाहिए वक्त दें. ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि और जब हालात बहुत खराब होते हैं, खासतौर पे मैं वहां कह रही हूँ जहाँ पे हालात बहुत खराब है और हस्बैंड वाइफ दोनों को नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहती हूँ जब एक नया बेबी होता है तब माँ को भी मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सा बेबी को कोई और संभाले, सो दैट यू कैन हैव योर टाइम. और ये हमारे पहले जमाने में होता था. पहले जमाने में खवातीन का जब प्रेगनेंसी होती थी, बेबी होता था, वो जाके अपनी अम्मी के पास रहती थी, कोई घर आता था, कोई मसाज कर देता था कोई. अब की औरत के पास वो वाली सहूलियात नहीं है. तो अब की औरत खासतौर पर जो अर्बन लिविंग में, मुझे वो टाइम मांगती है तो ऐसा लगता है ये मगरिब से आ गई है कोई चीज इसके अंदर. क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं तो अपने कल्चर को पहले से पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ. कहते हैं पहले की औरत बहुत मेहनत करती थी बेशक, लेकिन उसके लिए सहूलियात भी थी. तो लड़कियों को ये चाहिए, खवातीन को ये चाहिए कि वो जरूर अपनी रूटीन, उनकी एक दिन का कुछ वक्त, हफ्ते के कुछ घंटे, महीने का एक दिन उनका होना चाहिए जिनको वो अपने लिहाज से प्लान करें, जिसमें वो काम करेंगी जिससे वो खुश होती हैं और गिल्ट महसूस नहीं करेंगी. आप ये कहेंगी मैं फ्यूल अप हो जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह सबका ख्याल रखूंगी. Exactly. Thank you so much. That was so insightful and so good to hear this from someone who has religious knowledge as well as exposure of worldwide exposure you have, mashallah. And hearing this from someone is very relieving for most of us. Secondly, I would like to see कि हमारे यहाँ जो है especially on religious forums women का role और women के जो relations हैं उनकी तो बहुत discussions होती है. We know that how a mother should behave. Even the men know that माँ की क्या responsibilities हैं, wife की क्या हैं. But we very rarely discuss the role of a father, a husband, or a brother. So I would like you to kindly tell that what does Islam say that how should a father be in our society? We have seen that एक तो आजकल corporate culture में 9 to 5 job में they really don't have time when they come home at the end of the day. तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कोई रखी जाती कि वो कुछ पार्टिसिपेट करें घर में, एंड दे डोंट इवन हैव एनर्जी और एनी नॉलेज
So how can we balance it in today's world, in this 21st century, that work and life balance for both men and women? If they are working, how should they manage house and work? Because jobs are also demanding and houses are also demanding. So there's a lot to balance in 24 hours. So and especially the role of a husband or a brother, how much they should contribute in the house. This is a very important question, very important question. And men should be thinking about it, and it will be good for their mental health as well. It will be good for their relationships as well. So this is very important. Okay, very interestingly, हमने ये role divide कर लिया कि this is for you outside of the house and this is for me for inside the house. Whereas when we see Islamic tradition, this is not the case. As a father, men also has a lot of responsibility. Let's start with Luqman alayhi salam. हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत कुरान के अंदर है ना, सूरह लुकमान में, कि वो अपने बेटे के साथ बैठते हैं और उसको ये सिखाते हैं, बेटा ये करना वो करना. उसके बाद वी हैव these stories about Yaqub alayhi salam and his bonding with Yusuf alayhi salam and his sons, and that we have this understanding about Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam. अच्छा, ये तो हमें पता चला कि फादर सन रिलेशनशिप के ऊपर कुरान क्या बात करता है. Now let's come back to the most beautiful and the perfect man on earth, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are certain roles that we think men should not play, or they should not have certain behaviors and we don't like it. For instance, एक बाप ने अपने बेबी को गोद में लिया हुआ, छोटे बच्चे को हम उसको पसंद नहीं करते. हम कहते हैं वो बच्चा पी पी कर देगा, बाप का कपड़ा खराब होगा, बाप ने नमाज पढ़ने जाना है. और अगर बच्चा के साथ खेल रहा है बाप या उसको खाना खिला रहा है, तो बड़ों को बुरा लगता है कि ये भाई तुम्हारे बाप ने तो कभी गोद नहीं लिया. Why are you taking this child in your lap? Mother of the baby. ऐसा लगता है कि मदर किधर है, बाप क्यों पकड़ा हुआ है? माँ किधर है? अगर बच्चा रो रहा है और बाप ने संभाले तो तुमने कैसे? या कहीं बाहर बाजार चले गए और पकड़ लिया तो ये तो जन मुरीद है. या अगर बच्चा रो रहा है उसको बोतल दे दिया, या बच्चा बीमार है और बाप उसको नहीं बल्कि माँ उसको करेगी. लेकिन when we see the Islamic tradition, Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, things are very different. So this baby of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dying in his deathbed. और वो किसकी गोद में? आपने कभी सोचा? I always ask this question. Where was the mother of the child? The hadith says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was there in the house of that blacksmith, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was holding the child, and the child was dying in his lap, and he was crying at that time. Where was the mother? Is this coming from West? Is this from West? Am I an Islamic feminist saying all these things? And then there is a man, and Prophet sallallahu alaihi wasallam is kissing this child, and this man is saying, I have 10 children and I have never kissed them. And Prophet sallallahu alaihi wasallam ने क्या कहा? अगर तुम्हारे दिल में रहमत नहीं है तो मैं क्या करूं? उन्होंने ये नहीं कहा yes, this is the man's role, this is how a man should be, है ना. लेकिन Prophet sallallahu alaihi wasallam ने उल्टी बात की. उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल अलग बात की. उन्होंने कहा कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो मैं क्या करूं? Now this man, who is the best man on earth, he has the most important responsibility in the state. He is sitting in masjid and he's giving this khutbah, and this child comes in, and this person, this the best person in the world, sallallahu alaihi wasallam, he stops it. He goes there, he runs for the child, carries him, kisses him, comes back and starts. So ये जो relationship है और तरबिया में, फिर हमें पता है कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is playing with the kids. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is giving them a ride. Prophet sallallahu alaihi wasallam is hugging them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam असल में एक बच्ची की नाक पोंछ रहे हैं. तो और Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास एक बच्चा है और उसने उनका कपड़े पे पी पी कर दिया. Prophet sallallahu alaihi wasallam कहते हैं परेशान नहीं हो, इसको क्लीन कर दो, इट्स ओके. सो ये जो रिलेशनशिप है ये तो हम बाप के हवाले से सुन रहे हैं. इसी तरह जब लड़के बड़े होते हैं, लड़कियों को इत्मीनान मिलता है बाप की सपोर्ट से. और ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप सब जितनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन बैठी हैं, मोस्ट ऑफ देम कहेंगी कि हमारे बाप हमारे पीछे थे. लेकिन हस्बैंड्स को भी इसी तरह चाहिए. हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए कौन सपोर्ट था? हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए. हम अज़वाज मुतहहरात को देखते हैं, हजरत बीबी फातिमा को देखते हैं. एक औरत के लिए, एक बेटी के लिए, एक शौहर के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट है और सोसाइटी की सपोर्ट है. तो मेरे ख्याल है कि तरबिया हो, चाहे बीवी के साथ खेलना हो. खेलने कितनी अजीब बात है ना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस लगा रहे हैं, अपनी बीवी को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, उनको ये तमाशा दिखा रहे हैं हबशियों का. तो ये फन टाइम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये सब चीजें जो हैं वो हमें इस्लामिक ट्रेडिशन से मिलती हैं. They are very important for a healthy relationship, husband and wife relationship. और बीवी खुश होगी तो फिर वो चीजें आगे होंगी और इससे एक healthy
relationship मेरे ख्याल है बनेगी, और healthy बच्चे परवान होंगे, mentally healthy की भी बात करें. Exactly. Thank you so much for this knowledge, and really, it's really good to have these discussions in our homes. I think because हमारे subcontinent की वजह से, maybe because of our history and this region especially, तो उसमें इस तरह की बातें जो है convey भी नहीं की जाती हैं. I feel like mostly people in especially elders in the household, they are mostly lecturing the girl about her responsibilities. They are mostly talking about how Jahannam is going to be, how hell is. Even a few days back, I was discussing with a friend that we discuss Jannah so less that we don't know much about it, and we know so much about Jahannam and its azab के वो बस फिर वो जो Islamic image है वो वेस्ट में भी इसी तरह का जाता है कि एक घुटी हुई सोसाइटी है. Let me talk about our culture as well. Like whenever we think that, whenever we talk about any good thing, we feel like it is coming from the West, and our part of the world, like Mashriq or East or Barasagir Indo-Pak, they have all the bad things going on for a long time, but that's not the case. My favorite writer, Khuratul Haider, she always mentioned about her father, always. She has all the memories, all the write-ups that she wrote, they all glorify his father, and she doesn't mention about her mother. So father being the strongest. And then I was reading this book, very famous book, हमारे बहुत सारे audience वालों ने पढ़ी होगी, Shajare Sayadar, in which the daughter writes about the parents and mainly Maulana Maududi and how he supports. Like he had very limited time. He was a very busy person, a scholar, a writer, and a leader of the Ummah and of a political party, a religious party. But yet, how he supports his daughters, it's all written in the book. So every strong woman in our society, she talks about very highly about her father. और मैं आपको positive, let's talk positive as well about culture. बाहर के मुल्कों में every single youth has to pay for their own studies. Like you should take responsibility, but beyond 18 years old, I'm not going to pay for you. I'm telling you this. And this is very normal. I have a patient, I have to release her or him, but I cannot because the mother is saying, I don't have a place for this person. He or she should find his own place. तो हम कभी shelter home ढूंढ रहे हैं, कभी हम youth की places ढूंढ रहे हैं. There is no way. और अगर वो youth या वो जो adult है, if for some days he's living with parents, तो वो कहेंगे कि मैं दे रहा हूँ या you should pay for me, but I'm giving you just a temporary residence. Whereas in our culture it is like, मैं अगर पूरी डॉक्टर बन गई तो मेरे अब्बा ने मेरी फीसें भरी हैं. आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो आपके अब्बा आपके साथ थे, आपका भाई आपको छोड़ने जाता था. We don't know anything about most of us. I'm not saying all of us. बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन बेचारियों को ये सपोर्ट नहीं है, लेकिन most of us we have the support of our parents. और फिर हमारी शादी होती है तो husbands हमारी फीसें भरते हैं. This is a beauty of our culture. And we should bring it to the forefront as well. Or in the households where people are not practicing this, they should also practice it. This is our culture. This is about our own tradition. We are not talking about the West. This is not coming from outside. Like fathers, husbands, brothers, they have always been a great support for all the great women. Whoever does a great thing, उसका husband अमूमन उनके लिए support होती है. So I think लड़ाई की फजा में बात नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे की पॉजिटिविटी के ऊपर बात करनी है और उसको अप्रिशिएट करना. यू डू दिस फॉर मी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. तो फिर इंशाल्लाह चीजें अच्छी. That's a very good point. I wanted to get you to say that कि हमारे appreciative sentences और compliments देने का रिवाज भी मुझे लगता है कि कम होता जा रहा है. Like we learn it that teachers का टोन ये होता है कि बस गलती पॉइंट आउट करना, पेरेंट्स का भी, और सिबलिंग्स भी आपस में एक दूसरे को यूजुअली दे जस्ट लेग पुलिंग, मजाक में या प्यार में. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन आवर रिलेशनशिप्स बट वी डोंट एक्सप्रेस इट वर्बली. सो आई थिंक वर्बली एक्सप्रेस एंड वी सी फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्बल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेशन की उससे वो पार्ट आ गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट्स दें और यू नो यू कम्युनिकेट इन अ वेरी हेल्दी पॉजिटिव वे. उससे आई थिंक काफी मसले हल हो जाएंगे जो फैमिलीज में, हाउस होल्ड्स में होते हैं. थोड़ा सा शुक्रिया कह देना. थोड़ा सा मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ. आपने एक जगह क्वेश्चन मुझे लिख के दिया था और शायद वो आया हो कि हाउ टू ब्रिंग दिस हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन द फैमिली. वन शुड टेक द लीड बिकॉज नॉट एवरीबody understands in the family, but they will learn and inshallah they will do it. So how I started in my family is where when my husband bought anything for my kids, I used to say, did you say thank you to Abu? Did you say Jazakallah to Abu? That was something which was new for my husband.
But when my kids said, Jazakallah, Abu, so there used to be a big smile on my husband's face. And then I used to talk to them, Abu na aapke liye karke, you have this poster of a car and you're saying that I will buy this car when I grow up. Do you know that your father always wanted to buy a sports car, but he did not buy it because he invested all the money for you guys. So my kids were like very emotional. They went to their dad and they said, thank you so much, Abu. And my husband was like, what's going on? But then very slowly and gradually he also learned that, and he started saying this, जाओ अपनी अम्मी को thank you कह के आओ. इसी तरह अगर दादी ने कुछ कर दिया, like हमारे घर में इस तरह था. I'm not saying कि मेरा exemplary घराना है, but I'm just giving an example. So जब हमने अपने घर में अपने बच्चों के लिए ईद पे कोई गिफ्ट्स लिए या किसी पे, so my husband used to take it to his father and वो उनके अपने अब्बू से, because मेरे जो ससुर थे वो माजूर थे, could not move at all. So my husband used to give it to his dad, and we used to go to his room and we were all sitting there. और फिर मेरे जो ससुर है ना वो गिफ्ट दिया करते थे बच्चों को कि ये ईद का गिफ्ट है, and we all say thank you. So ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आप लाना शुरू करें. It's hard, मगर हम करना शुरू करें और थैंक यू कहना शुरू करें. वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मैं बात बताऊं, ये मैंने सिर्फ वेस्ट में देखा है कि जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हमारे हमसे सीनियर होते हैं, जब like I was doing the work all alone and they actually say thank you to you, thank you so much कि आपने रिपोर्ट लिख दी. That was my job. I mean, that was my job. अगर वो नहीं, लेकिन when I do the thing, you तो क्यों, yeah, if you're paying, so you feel entitled to insult the other person, but it's not the case. And when you're in a used to give compliments. If you're a mother, if you're a father, if you're a saas, if you are a badi bahu, if you are a elder brother or a husband, you will never say thank you because this is for granted. And it is considered this will spoil the other person. Whereas I feel if you say thank you or if you appreciate, then the person feels more influenced to do more and they will do more. आप एक दफा अपनी बेगम को कह दें कि क्या दाल बनाई है, तो वो कल फिर बनाएगी, लेकिन आप कह ये देते हैं मगर इसमें वो बात नहीं है जो अम्मी की दाल में थी. Exactly. I don't know why our culture went in this direction. I think because of our neighbors' influence in our society, maybe somewhere we lost the teachings of our holy prophet. थोड़े से insensitive और थोड़े से careless जुमले हैं, जैसे हम careless और reckless driving करते हैं, हमें नहीं पता होता हमारा ये वाला move एक्सीडेंट करवा सकता है. सो दूसरे को एम्पैथी करके अगर हम बात करें तो, और शुक्रिया कहा करें एक दूसरे को, और सब कहा करें, बड़े छोटे को, छोटे बड़े को, तो चीजें प्यारी हो जाएंगी इंशाल्लाह. Jazakallah so much for your this advice. It will be very helpful if we implement this in our house. Secondly, the other thing that I want to ask you is, Dr. Javeria, how to not think negative, because you know in our houses किसी ने किसी को कुछ taunt कर दिया, या somebody said something in a sarcastic manner, then you just start judging that person for the rest of your life, and it's natural because you feel like, okay, he's not she doesn't like me, like my elder sister doesn't like me, my mother-in-law doesn't like me, so you start questioning yourself as well. So how to not think negative, how to have बदगुमानी कैसे ना आने दें और फिर कैसे anxiety depression में ना गिर जाएं, how to avoid all those situations. If you have a few bad experiences, how to overcome them, how to get out of those things. Like I've seen a lot of people. Yes, let's first agree and accept that this is natural. You think bad about it. Okay? When somebody teases you, when somebody says a bad word about you, somebody says anything wrong, I mean bad about you, or bully you or whatever, you feel bad. This is natural. Nobody can stop it. Prophet Sallam को अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है, बदगुमानी जो हो जाती है, Prophet Sallam को अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि हमें पता है कि जो ये बातें आपके ऊपर बनाते हैं आपको इनसे तकलीफ होती है. तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एहसास दिलाया जाता है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं, बुरा तो लगेगा. ठीक है, नंबर 1. अब उसके लिए एटीट्यूड क्या इख्तियार करें, तो 2 तरह की कैटेगरीज में अभी मुख्तसर वक्त में हम 2 तरह की कैटेगरीज में उन लोगों को डाल देते हैं जिनकी बातें हमें हर्ट करती हैं. एक वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ नहीं है, हम अच्छे हैं बेचारे, लेकिन वक्त पड़ता है और वो हमें बुरा कह देते हैं. कभी किसी ने कोई जुमला कह दिया, कभी किसी ने कुछ, उनके लिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, यू फील बैड अबाउट इट, उनको रिलैक्सेशन दें, कभी और जाएं, और कभी वो अच्छा भी कहेंगे, कभी वो बुरा भी कहेंगे. तो जब वो अच्छा कहें तो भी याद रखें, और जब वो बुरा कहें तो अगर आपको हो तो आप उनसे बात कर लें, अगर आप नहीं कह सकते तो आप
उसको डील करने की कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे आपको पता होता है कि दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू, दिस पर्सन इज नॉट गोना एडमायर यू एवर, एंड दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर दोस टाइम्स वेयर द पर्सन कैन हिट यू एक्चुअली bad, hit you bad right in the spot where it pains the most, है ना? वहां पे क्या करें? So number one, जैसे आपने कहा, don't question yourself. The person is saying bad to me because I am a bad person. No. When you know that this person does not like you, so ये projection होती है. The person is putting their hatred towards you, onto you, and then they say कि you are a bad person. So आप ये नहीं समझे, अपने आप को question नहीं करें, अपने आप को guilt नहीं करें. Number two बात ये है कि उस person से जो है वो गुरेज करें, 1-to-1 पे मत आए, कोशिश करें, इससे कोई फायदा नहीं होता, बातें खराब होती हैं, इग्नोर करें. लेकिन वो जो अंदर आता जा रहा है उसका हम क्या करें? कोई इतना फरिश्ता नहीं है कि वो खुद ही ठीक हो जाए, कल से मुस्कुराता आ जाए. तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी कोई दोस्त, अच्छी दोस्त, खराब दोस्त नहीं जो आपकी लड़ाइयां करवाए. कोई ऐसे समझदार, कोई मेंटोर, कोई सपोर्ट को होना चाहिए जिसके पास आप जाएं, ये कह दे, आप रो ले, वो आपको सपोर्ट करे, और ताकि आप फिर वापस आके उधर आ सके. तो आपको बहरहाल कहना जरूरी है. कोई ये ना कहे कि ये गीबत होती है, कुछ होता है, नहीं, कोई जगह चाहिए होती है जहाँ के. तीसरी बात ये कि अगर वो बंदा बहुत ही टॉक्सिक है और दिस इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो प्लीज हमारी सोसाइटी को मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज अलग होने को एक मसला मत बनाए. अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो व्हाई डू वी फोर्स देम टू लिव अंडर द सेम रूफ एंड टेक मैटर्स टू द एज वेयर तलाकें हो जाएं, कोई पागल हो जाए, किसी को डिप्रेशन हो जाए, किसी के बच्चे खराब हो जाएं, किसी की लड़की घर से भाग जाए, किसी का लड़का कोई गलत काम कर ले. डोंट ड्रैग इट टू दैट पॉइंट. इसलिए क्योंकि घर का माहौल खराब था, दोनों लोग आपस में लड़ते थे, एक के साथ ज्यादती होती थी. तो लेकिन हमने कहा भाई सेपरेट नहीं होना, ना घर अलग करना है, ना चूल्हा अलग करना है, ना डिवोर्स तक बात पहुंचनी है, इसी एक छत के नीचे जलना मरना है. तो इसके या तो कोई खुदकुशी कर लेगा, या लड़की घर से भाग जाएगी, या वो लड़की छोड़ देगी रिलीजन वगैरह, आपकी जो आने वाली जो नस्लें हैं. तो आपको खुद सोचना चाहिए, और ये रिलीजियस लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हम हर हाल में कहते हैं बस सब्र करो, बस घर को बचा के रखो, कोई इंतहा, कोई लिमिट होनी चाहिए. इंसाफ करने वाला बनना चाहिए. अल्लाह ताला ने बार बार कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसाफ के अलमबरदार बनो, रास्ते के अलमबरदार बनो. जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसकी बात सुनो, इसकी हिमायत करो, उसको सपोर्ट करो. तो अगर आपको लगता है कि साथ रहने की कोई राह है और साथ रहा जा सकता है तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं रह सकता तो आप सपोर्ट करें, अलग अलग रहे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात के अलग अलग हुजरे बनाए थे. वो दुनिया की बेहतरीन खवातीन थी, उनको भी मजबूर नहीं किया गया अंडर द वन सेम रूफ रहने के लिए. लेकिन हम मजबूर करते हैं और हालात खराब होते चले जाते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ बुराइयां होती हैं, लेकिन हम बस लगे हुए इस पे कि हमारा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम कोई बहुत ही अजीम शान सिस्टम था. वो उस वक्त का सिस्टम था जब बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी. ये हमने 250-250 के 120 घर के घर में सारे कुंबे को जमा करके रखा हुआ है, और हम बहुत प्राउड फील करें. आई एम सॉरी टू से, अगर आपके फाइनेंशियल रीजंस नहीं है, अगर आपके कोई और रीजंस है, डोंट फोर्स देम टू स्टे टुगेदर एट एनी कॉस्ट. And I think the thing keeps coming back to the same thing, that lack of communication from where we started, that because communication का रिवाज नहीं है, मुकालमे का रिवाज नहीं है, तो और अना है, देखिए अना भी है. इट्स नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, अना है ना. हमें से कोई छोड़ने को तैयार नहीं है. अगर आपको ये लगता है कि कोई थोड़ी दूर जाके रहेगा और मोहब्बत उससे बढ़ेगी, टेंशन कम होगी, लेकिन कोई अलग घर आएगा आपसे मिलेगा, व्हाई नॉट गो फॉर इट. और अगर वो दूर रहेगा फिर भी साथ रहने का क्या फायदा. तो लेट्स, हमें इश्यूज को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन मैं देख रही हूँ कि आई एम सॉरी टू से, हम कहते थे मगरिब में बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में तलाकें बढ़ गई, लेकिन अब रिलीजियस हलकों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. तो आखिर क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह तो नहीं हो सकती कि औरतें खराब हो गई हैं. प्लीज, ये बहुत गलत बात है. नॉलेज की कमी से दूरी, नॉलेज नहीं, ये भी मैं नहीं कहती, आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत रिलीजियस हलकों में भी बहुत कुछ हो रहा है. और भी कुछ चीजें जिस पे हमें सोचना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, गलतियों को तस्लीम करना चाहिए, अपने घरों में देखना चाहिए. हमें से बहुत सारे लोग हैं बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमने अपने घरों में क्या किया होता है हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, और इश्यूज को सही से देख के इंसाफ करके लोगों को उनके हिस्से देने चाहिए, और उस पर रेजिस्ट नहीं करना चाहिए. Exactly. Jazakallah. Thank you so much. Exactly. Your words are a true inspiration for all of us. They're exactly on the point. और हमारी सोसाइटी में काफी ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमने टैबू बना दिया. We don't talk about them. Like
For example, you being a psychiatrist know that mental health is not discussed at all in Pakistan, and in my generation, I see it's prevalent, even in boys, even in girls. कि वर्किंग जिनके सक्सेसफुल कैरियर है वो भी एंजाइटी डिप्रेशन और इन चीजों का शिकार है एंड दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली there's no awareness basically there are no counseling sessions no mentors जो guide कर सकें so I think that a lot needs to be done even now. Although there is a lot of awareness because of the internet, we can search online and read for ourselves and implement it. But still, you need a support system to make changes in your life or lifestyle. So आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि जो लोग anxious हैं, depressed हैं, they aren't willing to make a shift in their life कि बिल्कुल ही या फिर ये suggest किया जाता है कि भाई आप नमाज रोजा करें तो आपको depression नहीं होगा या lifestyle changes करें तो आप एंजाइटी इसलिए है कि भाई आप अल्लाह से दूर हैं आप नाउमीद हुए हैं आई थिंक जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इतना इस तरह से डिस्कस नहीं होते बीइंग गर्ल्स कि हम किसी को जाके एड्रेस कर सकें देन देयर इज एन इम्पेशेंस इन दिस जनरेशन अ लॉट दे नीड एवरीथिंग टू बी डन फास्ट एंड आई थिंक healing and betterment takes time. So how would you suggest that in 21st century one does not rush things and how to overcome the generation gap on the taboo topic? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी और नफ्सियाती अमराज अब बढ़ रहे हैं और यंग जनरेशन में और पुरानी जनरेशन इससे महफूज थी क्योंकि उनका ईमान अच्छा था और क्योंकि सिस्टम आई एम सॉरी टू से आई डोंट एग्री विद दैट. A lot of people who come to me, they talk about their mother suffering with some sort of unknown personality issues. They never knew about it, but the mother was ignorant of their needs. The mother was ignorant of kids. The mother had a certain personality issue, but nobody figured that out. There was a dad who was very suspicious of the mother. There was a dad who was very strict with daughters. There was a dad who was very, very rigid with the son. He used to beat him up very bad, and nobody knew what was going on with him. And now we say कि young generation को depression and anxiety हो रहा है. What was happening with that dad? What was happening with that grandfather of yours? What was happening with that grandmother of yours? There was a mental illness which was never identified, which was never sought help for, which was never treated. But you say, no, we didn't have any mental illnesses in the past. Now we have mental illnesses. No, it's only because we know about them. It's only about we are talking so much about go and seek help. It's not because there was no mental illness in the past. And agar iman बहुत important factor है. Religious affiliation, healthy lifestyle, good relationships, these are protective factors. जैसे किसी भी शुगर से बचने के लिए, हाइपरटेंशन से बचने के लिए, these are preventive कि आप हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ है. लेकिन अगर हो जाए फिर क्या करें? अगर हो गई डायबिटीज तो फिर क्या करें? अभी भी आप प्रिवेंशन की बात करेंगे सिर्फ. अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया अभी भी आप सिर्फ प्रिवेंशन की बात, अब तो दवा लेनी पड़ेगी ना, अब तो जाना पड़ेगा, वरना आपको पता है स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपको फालेज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, पता है ना आपको. सो वंस यू हैव इट देन यू गो एंड ट्रीट इट, राइट. लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव है, एक्सरसाइज करो, तेल की चीजें नहीं खाओ. बिल्कुल इसी तरह मेंटल इलनेस है. योर एफिलिएशन विद योर रिलीजन, योर spiritual connection with the higher power, Allah subhanahu wa ta'ala, you living a healthy lifestyle, you having a supportive family, these were all the things helping and working unless you did not have that illness. Once you have it, once you feel like that your emotions, your thought process is actually affecting your life, your relationships, your daily activities, this is the time when you should be seeking help for. And then you should be going to the psychiatrist, you should be going to and talk to your doctors, you should be going to the healer, to a psychologist, to a counselor, whatever. Or if you're thinking like relationships are not getting any better because with one person there are certain personality issues. आज ही मेरे पास किसी खातून का फोन आया है कि उनका हस्बैंड इतना ज्यादा उन पे शक करता है कि उनको खाना भी नहीं पकाने देता और वो सिर्फ चाय और आटा गूंदने की जिम्मेदारी है और वो कहीं आने जाने नहीं देता, वो कुछ भी करने नहीं देता. वो कहती मैं क्या करूं और मुझे बू आ रही है कि दिस पर्सन हैज अ मेंटल इलनेस, ही शुड गो. लेकिन अभी बाकी लोगों को ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो उसको उसी तरह से कहेंगे सब्र करो, वापस जाओ, शादियां खत्म नहीं होती. लेकिन व्हाई डोंट वी टेक दिस मैन टू द डॉक्टर और द काउंसलर और जस्ट ट्रीट देम. So mental illnesses are very important. They should be addressed, they should be treated, and the whole society, the whole family should help the person
to go and seek help rather than saying कि नहीं ईमान से हो जाएगा, ये उससे हो जाएगा. ये पुरानी हो गई थ्योरी, इसका कोई ईमान से ताल्लुक नहीं है, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है. Anybody can have it. We don't know why a person has it. We don't. Okay, so what CBT exercises do you recommend? Somebody asked it on Facebook actually. Yeah. That are there any CBT exercises that you recommend people should do on their own self? I think CBT जो है, जो CBT होती है, it's not a self-help technique. ठीक है? It's not something that you can do with yourself. CBT is something which is done by a therapist. सही है? And until unless you have a manageable issue, mental health issue or कोई भी, then you do the self-help things and you do the preventive measures, right? Do you understand what I mean? But when you feel like it is not managed by you only, you try to talk to yourself, you try to calm down yourself, you try to tell yourself all the good things, you pray to Allah subhanahu wa ta'ala, but that's not helping. None of that is helping. Now, this is the time you should go and seek someone else's help. अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प नहीं चलेगी. लेकिन बिफोर दैट, जब आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं कभी उदास होती हूँ, कभी एंजाइटी में होती हूँ, कभी परेशान, लेकिन मैं फिर ठीक भी हो जाती हूँ और मैनेजेबल है और ये इतना लंबा नहीं होता कि इसकी वजह से मेरे काम खराब होते हो, मेरे रिलेशनशिप खराब होते हो, ये होता है वो होता है, तो फिर तो मैं आपसे कहूंगी कि आप खुद करें, वॉक करें, कोई एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छे मशगले रखें, पौधे रखना. वो पहले खवातीन सिलाई कढ़ाई करती थी, पॉट्स बनाती थी, पेंटिंग करती थी, कोई भी मशगले रखना. ये जो हमारी दीन का काम करने की एक्टिविटीज होती है, जो जमात की खवातीन है बाहर जाके काम करती हैं, इट्स अ वॉलंटियर वर्क, जो कि वेस्ट में कहा जाता है गो डू सम वॉलंटियर वर्क. दीज आर ऑल हेल्दी एक्टिविटीज. बट वंस यू फील लाइक नाउ नो this is something that I cannot manage on my own, like there's a girl who comes to me and she's having these issues where she washes her hands all the time and she can't cook, she can't take care of the house, and mother is actually very angry with her and everybody is just very angry with her. Now there is something wrong with the girl. She cannot just help herself on her own. She should go out and seek treatment. इसी तरह अगर रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आपकी आपस की बातों से ठीक नहीं हो रहा, मियाँ भी तकरीरें कर रहा है, बीवी भी तकरीरें करी, क्योंकि आप तो सारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको तकरीरें करना बहुत अच्छी आती हैं. So he is doing his speeches and she is doing her speeches, but the things are not getting better. Now this is the point where you guys should stop and you should go to a third person who can help you. पुराने जमाने में घर में समझदार लोग होते थे, अब बहुत ज्यादा बायसेस हो गए. वो उसका साथ देगा, वो उसका, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं जो थर्ड पार्टी है, who is not biased and who can help you identify your issues and help you how to manage them. So क्वेश्चन का सवाल का आंसर ये है कि जब तक वो नहीं होता आपको मसला, जब तक आप करें. लेकिन CBT और जो दूसरी चीजें, they are done by the therapist and you should go to a certified authentic professional. Yes. And then there is a lack of marriage counselors as well. आपकी बात से मुझे याद आया कि we need marriage counseling even before the wedding happens. I think a girl and boy should be attending some sort of training sessions, because एक तो genders different होते हैं और फिर हमारे दोनों genders को brought up थोड़ा differently किया जाता है. Boys are not expected I much think to do anything. This is something which was done in the past. This was something which was done in the past. ये जो लड़कियां होती थी कुरान पढ़ने जाती थी, वो कुरान पढ़ने वाली है उनको सिखाया करती थी. कोई इस्तानी होती थी, क्योंकि देखें एक मसला मैं आपको बताती हूँ, हर चीज नए जमाने की अच्छी नहीं है, ये भी बता दूं. नए जमाने का मसला ये था कि हमने एकेडमिक लर्निंग तो बहुत डाली है. आप देखें फिजिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, लेकिन लड़कियों को ये नहीं पढ़ा रहा कोई कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए या शादी में क्या करना चाहिए. जबकि पहले जमाने में ये वाले एकेडमिक नहीं होता था, लेकिन वो जिनके पास पढ़ने जाती थी वो उनको घर के मसाइल और ये, तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये खुद महसूस किया था कि मुझसे पहले की खवातीन को जब उनकी शादी होती थी वो अपनी प्रेगनेंसी और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस के लिए ज्यादा तैयार होती थी. आई डोंट नो, लेकिन मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की फाइनल ईयर की स्टूडेंट, एंड मुझे नहीं पता था कि हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू हैव अ रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, एंड आई वाज लाइक वेरी पैनिकिंग, आई वाज वेरी एंशियस व्हेन आई गॉट मैरिड, हाउ टू इंटरैक्ट विद हिम, हाउ टू हैव ऑल द रिलेशनशिप. तो मेरे ख्याल है पहले ये हो रहा था, अब ऐसी चीजें ना, बड़ों ने भी काम करना छोड़ दिया है और उन पता नहीं हर एक मसरूफ क्यों हो गया. ये सिर्फ यंग जनरेशन मसरूफ नहीं है, बड़े भी कुछ ज्यादा मसरूफ हैं. अम्मियों के पास भी अब टाइम नहीं है भाई, अपनी बेटियों की बच्चियों को, और दादियों के पास भी टाइम नहीं है अपनी पोतियों पोतों को रखने का. पहले जमाने में कैसे होती थी, मतलब मुझे मेरी नानी ने पाला, बल्कि मेरी भी अम्मी की नानी
और दादी का मुझे याद है, लेकिन अब तो नानी और दादियों के पास भी टाइम नहीं है। वो उनके भी खराब, हमारे घर खराब होते हैं, हमारी कारपेट खराब होती है, बच्चा शोर मचाता है। सो आई डोंट नो, देयर इज अ chaos एवरीवेयर, एवरीबॉडी शुड टेक रिस्पांसिबिलिटीज। तो मेरे ख्याल है कि वाकई ये तो पहले की बात थी, लेकिन बाद की बात के लिए मैं समझती हूँ दिस इज, वी आर इन अ डायर नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मैरिज काउंसलर्स वेयर बोथ men and women should go. सिर्फ And औरतों it को should काउंसलिंग not की be जरूरत नहीं considered a होती। taboo, exactly. And it should be It should, considered something good that they please, are and willing not to work only on for this. women and not only for wives. It is for both parties. Yes, exactly, exactly. Jazakallah so much for your time, Dr. Javeria. I think this was a very helpful session, and I hope our audience that are listening, they have learned something from this. Inshallah, if you give us time again, we can have a part 2 of this session. So do give us your feedback on any concluding thoughts for this youth, for current society of Pakistan. Would you like to say some words of encouragement or some words of, some lessons that you learned that we can have benefit from? Yeah. So I would like to say कि ये जो घर है ना, जो फैमिली है, ये असल में हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। ये हमारी सुकून की जगह है, और इसकी जो, इसको सुकून की जगह बनाने, इसको प्रोटेक्शन बनाने में, ये है हमारी सुकून की जगह। इसको, इसमें हर एक का रोल है। इसमें माँ का रोल है, बाप का रोल है, औलाद का रोल है, एक्सटेंडेड फैमिली का रोल है। हम कहते हैं औरत का रोल है, मगर नहीं, लेट मी से every single person who's taking benefits from this institution of a family has a role as well. Just one hadith of Prophet Muhammad sums it all up beautifully. Ek hadith mein he talks about the role of every single person. He says, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और जो हमारे बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करे, वो हमसे नहीं। ये छोटी सी हदीस है, oh my God, I've been thinking about it. It is saying it all. Every single person has two roles साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम। वो किसी का बड़ा होता है और किसी का छोटा होता है, और हम ये चाह रहे होते हैं कि हम अपने हुकूक सारे ले लें, चाहे हम बड़े बड़े भी ये चाह रहे होते हैं और छोटे भी ये चाह रहे होते हैं कि हम अपने हुकूक ले लें, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा नहीं करें। जबकि ये हदीस ये कह रही है, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और बड़ों से का एहतराम नहीं करे, वो हम में से नहीं। सो एवरी सिंगल पर्सन शुड प्ले अ रोल, और इस घर को पुरसुकून बनाइए, इसमें सबके लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब हम अपने घर को, हमने सुकून की जगह नहीं बनाई है, और इसमें हर बंदा इसको शैतान की तरह उस मियाँ बीवी के ताल्लुक को और बच्चे और माँ के ताल्लुक को खराब करने पे तुला हुआ है, तो अंदर जब कमजोर है तो लोग बाहर जाके और सुकून तलाश कर रहे हैं। कोई नशे में, कोई टीवी में, कोई कंप्यूटर में, कोई लड़कियों लड़कों के ताल्लुकात में, कोई किसी और चीज में। सो घर सिक्योर होगा, प्यारा होगा, तो लोग फिर बाहर नहीं जाएंगे, फिर घर आएंगे। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब पर है, सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक पर नहीं है। सब अपना रोल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये घर स्ट्रांग होगा। और घर जो होती है, ये वो फैक्ट्री है जहां पर इंसान बनते हैं। सो अगर आपको इंसानों की, आप सोचें इस दुनिया में जो बुरे काम हो रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मर्डरर्स हैं, और जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो नेक लोग हैं, ये सब घर की फैक्ट्री से बन के बड़े हुए हैं। सो अगर घर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो घर को फोकस करना चाहिए, और घर को इस तरह फोकस करना चाहिए कि किसी एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, बल्कि बड़े अपना रोल अदा करें, छोटे अपना रोल अदा करें, मर्द अपना रोल अदा करें, खवातीन अपना रोल अदा करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। गलतियां होंगी, नाचाकी भी होगी, एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के साथ रहें। Thank you so much, Dr. Javeria. So we learned, I especially learned from this talk that we have to prioritize things and and work hard for a balance. And first priority should be being abd of Allah Ta'ala, obviously. Second should be our family, home, and third then comes like work and other things fall one after the other. बस आखिरी एक बात कह दूं, क्योंकि जहां से सवाल शुरू किया था वहां पे अभी तुमने भी खत्म किया है, और ये कि लड़कियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी ना करें। ये मत समझे कि अगर अभी शादी के फौरन बाद अभी बच्चे हुए हैं तो वो क्या हुआ, वो जो मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, वो क्या हुआ जो मैं इंजीनियर बनना चाह रही थी, वो मैं और अभी थोड़े से दिन है शादी के और हमें लगा कि मेरी पर्सनालिटी खो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप नई जॉब शुरू करते हो, नई यूनिवर्सिटी शुरू करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर कितना मुश्किल गुजरता है। आपसे कहा जाता है आप सब भूल जाओ। मैंने जब ये जॉब शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया में, व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम कनाडा, सो द डॉक्टर साहब आई कांटेक्टेड, ही टोल्ड मी व्हेन यू स्टार्ट दिस जॉब जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, कि यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव
kitchen, you have to just focus on that job because you're coming to a new country, to a new system and everything. So you have to focus, and then slowly and gradually, once you're settled in that system, then you can do the rest of the things. बिल्कुल इसी तरह जब आप एक न्यू वाइफ बनते हैं, जब आप एक न्यू मदर बनते हैं, चीजें आपके लिए नई, पहला बच्चा सबसे मुश्किल है. मुझसे लोग पूछते हैं आप 5 बच्चों को कैसे पाला, हमसे 2 नहीं पल रहे. और मैं उनको पता है क्या जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ 2 मुश्किल होते हैं, 5 आसान होते हैं. इस जवाब का मतलब ये है कि इनिशियली इट्स हार्ड. गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव योर किड्स सम टाइम, गिव योर फैमिली सम टाइम. चीजें बेहतर हो जाएंगी. यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर योर ड्रीम्स. टाइम इज नॉट गोइंग अवे. if you are intelligent, if you have education, you are never gonna forget it, you will have it. लेकिन अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें और अपनी फैमिली को टाइम दें. ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, इनको एंजॉय करें. वो सारी इम्परफेक्शंस को आप एंजॉय करें. जब आपकी बॉडी शेप खराब होती है और आपकी नींदें खराब होती हैं, इन सबको एंजॉय करें. लेटर ऑन ये सब चीजें वापस आ जाएंगी. और जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, मिडिल एज, जब आपके बच्चे टीनेज होंगे, उस वक्त आप दोबारा यंग होंगी और लोग आपको कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल अर्ली 20s की लग रही हैं. सो ये कब ये आएगा टाइम. ये मत सोचो कि अभी बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है और मैं तो अभी से नहीं. द टाइम विल कम बैक. जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड हैंग ऑन. I thank you so much. I asked this in the middle, and I think उसका answer अब ज़्यादा clear हो गया कि we are very impatient. You know, this generation wants everything to be done simultaneously. Like in one day, we want it to be perfect, job perfect, house perfect, the kids perfect, and that's very hard. You know, juggling all the things. So if we take one thing at a time and prioritize our different responsibilities, it will be much easier. Thank you so much, Dr. Javeria. We look forward to having you again with us, inshallah. And I hope our listeners enjoyed this session and learned from it and realized that our religion is a beautiful religion. And although I know that because of this region or maybe the influence of subcontinent, some concepts of Islam, we have lost some concepts, but there's always hope for betterment. And through education, through learning, through dialogue, through these kind of sessions, we can be more aware and be more hopeful for our future, inshallah. Thank you so much for inviting me, and I hope that we all learn some good things and we will be able to apply some of these things in our lives to make it like easier and more beautiful. Bother you again for another session soon. Allah Hafiz.